They call this place Kalemegdan Fortress. Well, it's not. So in one single street, you have 4 different buildings, 200 years of history. No cash, I don't have So welcome to the another video. Good evening. और बस ऐसे ही कुछ प्लान नहीं था नोवी सैड आने का, और मैं पहुंच गया नोवी साद सिटी में। कुछ प्लान नहीं था आने का, बस ऐसे ही एक हॉस्टल में प्लान बन गया। बल्कि यहाँ पे मुझे आना था बाद में, कुछ दिनों के बाद। अभी से कुछ टाइम के लिए आया हुआ यहाँ पे, थोड़ा घूम के वापस चला जाऊँगा बेलग्रेड सिटी में, बाद में यहाँ पे आ जाऊँगा। पूरा क्रिसमस का वाइब चल रहा है यार यहाँ पे, मतलब टिपिकल यूरोपियन जो वाइब होती है ना क्रिसमस की। Harry and Dari. We are a fucking famous guy in the Serbia. You are fucking legend, motherfucker. And we are legend here. So fuck off. We are Novi Sad, not Novi happy. Never be happy. We are in the Novi Sad. Yeah, we should be like fucking sad. So we are come here to make Novi Sad, to make Novi happy. Yeah. So guys, I hope you understand what I'm saying. Okay. My English not very well, and his also. Yeah, I'm shitty Serbian. He's this shitty. Is shitty Indian. I'm shitty Indian. So he's our friend. Hey. We just meet here and. Yeah. So what we can do? Just to take a picture and enjoy with us our vlog. So meet you guys with the see you in another life. Happy? Why not? Why fucking not? Yeah. It's fucking warm. So good morning friends, welcome back to the another video। और आज मैं निकला हूँ थोड़ा बेलग्रेड घूमने। 5-6 दिन हुए यहाँ पे आके मुझे, मंडे को आया था, और आज तारीख है कुछ 28 नवंबर। तो 5-6 दिन ऐसे ही हॉस्टल में टाइम पास कर रहा था, काम कर रहा था, क्योंकि मेरा काम चालू ही है। तो आज सोचा थोड़ा बाहर घूम लेते, तो चलिए थोड़ा बहुत देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बेलग्रेड सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया है, एकदम धूप खिली हुई है और अच्छी खासी गर्मी है, ठंड बिल्कुल नहीं है। एकदम अच्छा मौसम है आज, तो इट्स राइट टाइम टू एक्सप्लोर बेलग्रेड सिटी हियर। और अभी मैं हूँ फ़िलहाल बेलग्रेड के रिपब्लिक स्क्वायर पे, यू कैन सी हियर, इट्स क्वाइट गुड। और मैंने एक बात नोटिस की, यहाँ पे सब लोग जो सिग्नल का बहुत पालन करते हैं, जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो तब तक कोई नहीं निकलता, सब लोग वही खड़े रहेंगे, भले गाड़ी हो ना हो, सब लोग वही खड़े रहेंगे। इट्स वेरी गुड थिंग। राइट नाउ आई एम एट रिपब्लिक स्क्वायर, एज यू कैन सी। ये जो पीछे है यहाँ का। So welcome to the downtown tour. My name is Nemanja, and I'll be your tour guide for the approximately next 2.5 hours. It's ultimately the length of the tour all depends on you. How fast are you walking and how many questions do you ask. That's the kind of. तो आज की वीडियो में आप देखेंगे बेलग्रेड सिटी का फ्री वॉकिंग टूर। इसमें बेलग्रेड शहर का एक छोटा सा हिस्सा जो कल्चरल और हिस्टोरिकल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका टूर होगा। हमारे ये गाइड कुछ इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें बताएंगे। So keep watching this video and let's start. We're going to start here at the Republic Square. This is considered to be the central square of Belgrade, the main square. From here we're going to go to the nearby Bohemian quarters or street called Skadalia, where we're going to talk about kafanas. That's like the local taverns in Balkans and their significance for our society. Then we're going to walk through one of the oldest neighborhoods of Belgrade called Dorchel. And from there we're going to enter the area of the Belgrade Fortress. So we're going to circle around the Belgrade Fortress and explore it for approximately 45 minutes or so, and exit to the opposite side and finish our tour at the Belgrade Cathedral, or in old days. It was called Istanbul Kapia or Istanbul Gate, and
Why it's called that? Well, it was basically the starting position of the road that used to connect Belgrade and Istanbul, of course. You know, the road was built by the Romans in some 2,000 years ago. It was called Via Militaris. It starts here in Belgrade, where you have Istanbul Gate, and it finishes in Istanbul, where you still have those old Theodosian walls, and at the end of this road you still have a Belgrade Gate. Even I was planning to go Novi Sad. Actually, I was planning to go Novi Sad today only. But is it fine if I take you in the vlog? But you have like a channel or something? Yeah. So that It's like YouTube or something? YouTube, yeah. Okay. So you can give it later. Yeah. It's fine. So guys, this is Julia Hi. from Colombia. Yeah. So we just met in the hostel today morning, and now we're in the downtown tour of Belgrade. Check out this one. Yeah. Okay, let's stop here. So, our second stop on the tour, this is considered to be the Bohemian kind of quarters, or this street called Skadarlia. Although the name is kind of more like a nickname. Now, those of you who can actually read Cyrillic alphabet, you can read in this old style 19th century street signs. It's called Skadarska ulica, Street of Skadar. Now, it's, you know, before I can explain why this became a Bohemian street, maybe you should first explain actually the name. सर्बिया पे 400 साल ओटोमन एम्पायर ने राज किया। ओटोमन एम्पायर आगे चल के एक रिपब्लिक नेशन बना, जिसे आज हम टर्की और तुर्की से जानते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रीट एक हिस्टोरिकल स्ट्रीट है, तो चलिए जानते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Now, originally it was pronounced in Turkish kahvehane, that means coffee houses. Now, why is this important? Well, you know, these coffee houses were probably, and you know, culture of drinking coffee was probably first established in Ottoman Empire, one of the first countries in the world, I imagine. Why is that? Well, most of the inhabitants of the Ottoman Empire in those days were Muslims, and as such they had the restrictions. You know, they couldn't drink any alcohol, but they still have to have some social life. So they established these, you know, coffee houses where they can drink coffee and socialize. Now, why? But not many people know that originally coffee came from Horn of Africa. You know, from countries like Somalia or Ethiopia, or people of the Arabian Peninsula, a place called Yemen. But besides changing the name, they also changed the essence. Why? Well, as the Christians, they would drink almost anything but coffee, you know, mostly alcohol. So, essentially, what used to be coffee places became like a tavern. You know? And one of the more historical ironies is that, you know, the Ottomans, so let's say Turks, brought this tradition to us. But if you nowadays go to Istanbul or any major cities of, you know, like Turkey, you will see that most of the people drink tea. You know, talking about historical irony, they brought it, but they didn't keep it that much. और एक्चुअली मेरा हॉस्टल भी यहाँ पे ही है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। If you can just look at this, here, this building, this is my hostel where I am staying. और यहाँ पे पहले ऐसा हुआ करता था कि ये जो स्ट्रीट है, जो बहुत पहले मतलब 19th सेंचुरी में जब ओटोमन एम्पायर टर्की का यहाँ पे राज करता था, तो उसके बाद जब ओटोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब तोड़ी गई यहाँ पे, और एक नया यूरोपियन फील देने के लिए वैसे बनाया गया। हेलो फाइन वाला। तो वो टाइम पे जब ओटोमन एम्पायर था तो ऑब्वियसली दैट वाज अ मुस्लिम एम्पायर, राइट। सो वो लोग वाइन नहीं पीते थे, दारू नहीं पीते थे, तो उनको कुछ चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स चालू किए। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगे। Well, a lot of people consider to be the most well-known artist that used to actually live in this street. His name is Đura Jakšić. Đura is like a Serbian equivalent of George. So he actually used to live in this house behind. You can see also a commemorative plate dedicated to him. Now, to talk about his life story, I suppose I will need a couple of hours. But when I try to describe Đura, you know, he was quite a Renaissance man. You know, he was a painter, a poet, a playwright. He was quite an artist. So he was kind of a Serbian version of Van Gogh. Now, what that means? He was well-known artist, you know, and respected, but he was constantly in financial problems. You know. तो आपने जो स्टैचू देखा उसका नाम था जुड़ा। वो ऐसा आदमी था कि वो होता है ना कि किसी होटल में जाओ, खाओ, वो बोलो मैं बाद में पैसे देता हूँ, मैं पैसे बाद में देता हूँ, वो उस टाइप का आदमी था। कुछ नए कफाना में गया सेम तरीका अपनाने के लिए, तो उसको पहले से पता था वो ओनर को, क्योंकि छोटा सा शहर था और ये आदमी ऐसा करता है, खा के पैसा नहीं देता,
कल देता हूँ, परसों देता हूँ। तो उसने बोला कि देख, एक तो बिल दे, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊँगा। चल एक काम कर, मेरे लिए एक पेंटिंग बना मेरे कफाना के लिए। और उसके बाद वो आदमी ने ऐसी पेंटिंग बनाई कि वो ऑनर बहुत खुश होगा। वो बोला कि आज से तेरे लिए लंच फ्री मेरी तरफ से, कितना भी खा कितना भी पी। तो या दैट्स ग्रेट, राइट? This is Obilići venac, Toplički venac, Kosančići venac. So these zigzagging streets is how that wall used to look like before it was demolished. It's more or less, you know, I mentioned this here a couple of times. Now, why this year is so important? Well, in 1866, the last Ottoman soldier left from Belgrade, or from Serbia itself. Now, you have to understand the context of this time period. तो जब सर्बिया पे ऑटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था तो सर्बिया की हालत थोड़ी बुरी ही थी। ज़रूरतमंद चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। एक बार एक छोटे से बच्चे को प्यास लगी और वो पानी भरने के लिए पास में पब्लिक फाउंटेन पे चला गया। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो उसने लाइन कट करके पानी भरा और अपनी प्यास बुझाई। वहाँ एक ऑटोमन सैनिक ने उसे देख लिया और उसके सर पे एक लोखंड के हथियार से वार कर दिया और उसमें उस बच्चे की मौत हुई। ये जगह यही है और इस घटना के बाद एक चिंगारी सी भड़क गई उन सर्बियन लोगों में, एंड दैट वाज काइंड ऑफ स्टार्ट ऑटोमन फॉल फ्रॉम सर्बिया। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ यहाँ पे, सब तुर्किश सेना चली गई यहाँ से, तो ये जो पार्ट है बेलग्रेड का, डाउनटाउन जिसे बोलते हैं, काफ़ी जगह उसे तोड़ दिया गया, नया स्ट्रक्चर बनाया गया, कुछ चीज़ें वैसे ही रखी, थोड़ा मॉडिफाई किया। और आज एक वो सब चीज़ें आज एक कल्चरल उस ब्रैकेट में आ जाता है जहाँ पे टूर कराते हैं। बल्कि ये जो टूर कर रहा हूँ मैं, ये फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बेलग्रेड में आओ रिपब्लिक स्क्वायर में, वहाँ पे एक आदमी होगा जो येलो रेनकोट या येलो अम्ब्रेला के साथ होगा, तो बस घूमो उसके साथ और देखो इस जगह को। Now, why they preserved this house when so many others were actually destroyed? Well, you can actually see that street that we came is hitting directly in this house. You know, this is kind of in the middle of the road. You have the same streets continuing the same line just behind this house. You only have this small alley as a bypass, you know. Why they preserve this? Well, it has a historical significance for Serbian society. Now, like I said, जब ऑटोमन के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठने लगी, तब ऑटोमन एम्पायर थोड़ा डर गया और लोगों में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें उन्होंने देना शुरू किया। उसी में से एक स्कूल, उन्होंने पूरे सर्बिया में स्कूल बनवाए। उसी में से एक स्कूल है जो 300 साल बाद भी आज टिका हुआ है। यूगोस्लाविया का फॉल हुआ तो उसके पहले सबसे बड़ा एक ही देश था यूगोस्लाविया, तो उसके बाद सर्बिया, मोंटेनेग्रो, मतलब इट डिवाइडेड द कंट्री इनटू सम स्मॉल कंट्रीज। लाइक सोवियत का जैसे ब्रेकडाउन हुआ वैसे यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ। the oldest religious object in Belgrade. It's mosque from 16th century. So at the time we had more than 100 mosques in Belgrade, and now we have only single one. And why is that? Well, और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये बेलग्रेड का अकेला मॉस्क है। So they kind of converted this mosque into a church. तो ऐसे बहुत सारे जो जगह थी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे, उनको कुछ तोड़ा गया, कुछ रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, अलग अलग शेप स्ट्रक्चर्स में उसको प्रिजर्व भी किया, रखा भी उन्होंने, सब कुछ नहीं तोड़ा। now we passed more than half of our tour, so actually this is a moment where I usually give you opportunity to make a pause here if you need a toilet break. You know, that's over there. But if nobody that needs to go, you can just continue and explore the city. So I have to offer. Need to go. Okay, then let's continue. ये बेलग्रेड फोर्ट है, जिसे कहा जाता है काले मकदान पार्क, उसका पीछे वाला एरिया है। तो बस लोग यहाँ पे आते हैं, आज संडे है तो पार्क थोड़ा भरा हुआ है, लोग आ गए बच्चों को लेकर अपने अपने। तो पीछे जो पार्क था उसका नाम था काले मकदान पार्क।
तो काले मकदम मीन्स बेसिकली क्लियर लैंड बेसिकली। और हम लोग एंटर हो चुके हैं फोर्ट में, देखते क्या है कैसा है। Here you can see, well, we passed one section of the wall that are more modern, and behind me you can see the remnants of the medieval fortifications. Most of the ones that you can see now are from early 15th century, from 1418, 1420s, 1450s, etc. But then the Ottomans invaded Balkans, so in early 15th century they moved the capital of Serbia as further away to the north as possible, so that was Belgrade. So when they were crossing the river and they saw the white fortification of the Belgrade, or Idunum at the time, from the distance, they said Vidi Beograd. Belgrade in Serbian is pronounced Beograd. That means white city. They said, look at the white city. That's how we got our current thing. ये जो पीछे पे गेट देखा उसका नाम है डेंजर गेट। तो बेसिकली जब प्रिजनर होते थे उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता था उस टाइम पे। जैसा कि आपने देखा ये जो नदी है ना, ये वाली वो सावा नदी है। तो यहाँ पे सावा और दानूब रिवर का संगम है बेसिकली। बेलग्रेड की जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं सावा एंड दानूब, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। In a span of some 150 years, Belgrade drastically changed from medieval settlement to more Baroque, and then Ottoman, and the rest is history, how they say. Used to use that karma cards maybe 10 years ago, so I forgot all the, bits and pieces how it's actually functioning. Is everybody here? Okay. Let's just wait for it for 1 second. You can enjoy the view also, I suppose. One of the symbols of Belgrade, this is a monument called Beogradski Pobednik, or Belgrade Victory Monument. You can see his left profile, and what you can see, his left foot is like this. So nothing is exposed from that angle. It's high enough so his private parts would be visible from the distance. So ladies, don't look too much. And what's the allegorical meaning of the sculpture? You can see a guy holding a turtle dove in his left hand and a sword in his right hand. So he says essentially what the artist envisioned: we greet you in peace, but if you attack us, we're going to defend ourselves. That's kind of more symbolical value of the sculpture. पिछले एपिसोड में जब मैं यहाँ पे आया था तो आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे वापस आऊँगा मैं एक्सप्लोर करने। अभी टूर के साथ आया हूँ, फिर भी वापस आऊँगा एक दिन टाइम पास करने के लिए। Next to it, you have these so-called Kremlin wall tombs, where they bury all the important guys from Soviet Union, revolutionaries, state dignitaries, etc. So this is the copy of that concept. That was opened in 1822. So next year they're gonna celebrate 200-year anniversary of this tower. Now it's called Znak Pitanja. That means question mark. As you can see above the door, the name of this place. Now, originally it wasn't called the question mark. Originally, when this was opened, this was called Kafana Kresabornica. Fine, I'll go change the name of the kafana. So he removed the old name and he put a question mark until he find the alternative name for the place. But just a few days later, everybody started to call it the question mark kafana. It's a question mark almost 200 years later. Question mark. And further away, the fourth object is how they started to develop in communist times, in 1960s. So in one single street, you have 4 different buildings, 200 years of history. And that's it for me. I hope you enjoyed the tour, and if you don't have any questions, thank you. Thank you. थैंक यू वाला। I hope you enjoyed it and learned something new and interesting. And I आज बहुत कुछ जाना है इस शहर के बारे में। अगर आप भी किसी यूरोपियन सिटी को विजिट करते हो तो ऐसी फ्री वॉकिंग टूर में ज़रूर जाना। बहुत कुछ जान जाओगे, कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो ये टूर फ्री होती है, पर दिस प्रोग्राम रन्स बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको ये टूर अच्छा लगता है तो इन गाइड्स को एक अच्छी रिस्पेक्टेबल टिप देना मत भूलना। विद दैट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो।
और अभी तक रुक ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।